awards from South Indian movies. So I don't want to mention this South Indian because of the regional movies, how they are playing a major role. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision and our Minister Shri Ashwin Vaishnav ji's guidance, our department brought, we want to be product to the producers. So for that, our ministry brought an amendment in Cinematography Act after 40 years to protect from the piracy. So this is a help to the business and ease of doing business and the cinema industry. Today is the AVGC sector is transforming from the industry as a multi-billion-dollar global industry. We have seen how the VFS are using these nowadays new cinemas. For that, our government of India, our ministry is going to establish a national center for AVGC. Why? It is a world-class, this institute is going to come. So, in this all broadcasting medias, whether it is in traditional media, whether it is in cinema, whether it is in AVGC, whether it is in satellite, so we want to bring up one umbrella. So for that, a WAVES conference, world level summit is going to happen in this year. So for the promotion of the industry, for the promotion of the sector, media and entertainment sector, so this summit is going to help as a creator economy in our country. And is the Film Facilitator Office is promoting co-production in India, and our government, our Prime Minister's guidance and our Sri Ashwin Vaishnavji's, the Indian cinema in this media and entertainment sector is leading the sector. Once again, I congratulate to each and every award winners to their remarkable achievements. Your contribution continue to push the boundaries of Indian cinema, making it an industry that we can all take pride in. Today's celebration will serve as a reminder of the power of cinema to inspire, challenge and entertain. Let us all celebrate the nature of the art of filmmaking, ensure that Indian cinema reaches new heights while staying true to its roots. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Ladies and gentlemen, we now move on to the next category of film awards. May I now invite and request Honorable President Srimati Droupadi Murmu and the dignitaries to come forward for the remaining awards, please. मान्यवर, कार्यक्रम के इस पड़ाव में फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आरंभ विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन के साथ मलयालम भाषा की फिल्म कदिकन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं श्री संजॉय सलील चौधरी। വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ ഒന്നോ ഇടയുന്നു. और जूरी की ओर से ये स्पेशल मेंशन है इस फिल्म के लिए प्रयोग की गई धुनों के लिए। फिल्म में गैर परंपरागत नवीन धुन रचने के साथ ये उम्मीद जगाते हैं कि धुनें अभी जिंदा हैं। और हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए अपनी अभिनय कला के लिए विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं जाने माने अभिनेता श्री मनोज वाजपेयी। हम सबने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। Shri Manoj Vajpayee displays skilled precision to showcase all the hidden aspects of human emotions, making the character come alive, a part to remember. Best feature film in language other than English, Schedule of the Constitution. For the best Tiva film, producer and director Dr. Bobby Sarma Barwa being awarded with Silver Lotus for the film Sikesal.
In the film, the dream to educate the people in a remote village of Ulukunchi becomes the purpose of life of a retired primary school teacher. Shall we put our hands together for the filmmaker? और स्पेशल मेंशन से आगे बढ़ते हुए फीचर फिल्म श्रेणी में अब सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स LLP एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री LLP की तरफ से श्री अभिषेक अग्रवाल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। ఈ కార్యానికి వైద్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎంచుకున్న ఇది మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ. The film is a masterful blend of religion and science, delivering a captivating mythical thriller that stands out in Telugu cinema. तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 और इसी फिल्म के निर्देशक श्री चंदू मोंदेती भी प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। धर्म और विज्ञान का कुशल समागम प्रस्तुत करती है ये फिल्म। फिल्म को एक ऐसी बांध कर रखने वाली थ्रिलर का रूप देता है इनका ये कला, जो तेलुगु सिनेमा में अनोखा है और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को जाता है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार। फिल्म के निर्माता मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शंस की तरफ से जाने माने एंटरप्रेन्योर और फिल्म प्रोड्यूसर श्री सुभाषकरन अलीराजा को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ஆதித்த கரிகாலன் எந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒருவர். The film delves into the life and times of the Chola dynasty with tremendous visual appeal and emotional drama. And for Ponniyin Selvan Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणि रत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जोरदार तालियां। और अब सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती प्रोड्यूसर जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री रविंद्र नारायण रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। मेरा होना ना होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी के जज्बे का दुखते रहना। A slice of history and literature depicting the freedom struggle of our motherland. पंजाबी फिल्म बागी दीती जो देशभक्ति से ही जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करती है और फिल्म के निर्देशक Director of the film Shri Mukesh Gautam also being awarded with Silver Lotus. सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती जो आजादी के संग्राम में गदर आंदोलन में एक 14 वर्षीय लड़की की हिम्मत की सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करती है। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के तौर पर फिल्म दमन को पुरस्कृत किया जा रहा है। जेवी मोशन पिक्चर्स के श्री दीपेंद्र समल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। आपण मैंने ये खाली ड्यूटी करने आसे ना, ये लोक मान जीवन बचाऊँ आ लोक मान सुरक्षित शुवाई हेले The film Daman deals with the malaria eradication program in the inaccessible tribal areas of Orissa. और फिल्म के निर्देशक श्री विशाल मौर्य को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म का टाइटल है दमन, दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से भी संबंधित है। और फिल्म के निर्देशक श्री देवी प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के पुरस्कार। और मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर उर्वशी थिएटर्स की फिल्म सऊदी वेलाफ का CC.225/2009 का चयन किया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप सेनन, जिन्हें रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the thought-provoking film dramatizes the pendency of cases in Indian courts, makes an earnest call for reforms of the responsive justice system. Shall we put our hands together for the filmmaker on the stage? फिल्म के निर्देशक श्री तरुण मूर्ति भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों पर एक गहन और बांध कर रखने वाली फिल्म है ये, जो संवेदनशील न्याय प्रणाली का भी आह्वान करती है। एक बार जोरदार तालियां। Moving on to the award for the best Kannada film goes to KGF Chapter 2, Srimati Shailaja Vijay receiving Silver Lotus on behalf of producer Hombale Films LLP. Criminal, he is the biggest businessman. This is the biggest national issue. KGF 2 involves a battle, as we know, among numerous gangs for possession of a vast collection of wealth. एक पीरियड एक्शन फिल्म है ये, जिसे इसकी असाधारण कल्पना और अविश्वसनीय तकनीकी बारीकियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म गुलमोहर। फिल्म के निर्माता स्टार स्टूडियोज, ऑटोनॉमस वर्क एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से श्री विक्रम दुग्गल रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या के लिए वेट कर रहा हूँ? आजा, छोड़ देना। मीटिंग में ऐसे ही जाते हो तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हमारे वर्तमान समाज की संवेदनाओं के साथ साथ रिश्तों को भी गहराई से प्रदर्शित करती है। फिल्म गुलमोहर के लिए जोरदार तालियां। The next award, Best Hindi Film and Best Screenplay, being given to director and dialogue writer Shri Rahul V. Chittala for Hindi film Gulmohar again, receiving the Silver Lotus. फिल्म गुलमोहर जिसको जा रहा है ये दूसरा पुरस्कार, और ये फिल्म अपने संवादों से विशेष छाप भी छोड़ती है। इसमें लेखक हर किरदार को अभिव्यक्त होने के उचित अवसर देता है। फिल्म के डायलॉग कितने इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं, और गुलमोहर भी इसका एक उदाहरण। The award for the best Bengali film given to Kaveri Antardan, Shri Surinder Singh receiving Silver Lotus on behalf of Surinder Films Private Limited. নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে সরকার কি কোনো সুস্থ লোক খুঁজে পায় না? उथल पुथल भरे समय को संवेदनशील तरीके से दिखाने और अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही श्री सुरेंद्र सिंह प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। कर रहे हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल। आणि पाले पुरी का पुरी फॉर्म होता तो पुनू मास होत नाही। मानवीय महत्वाकांक्षाओं और उनकी पूर्ति की जटिल प्रवृत्ति पर
इसकी शानदार कथा के लिए फिल्म एमुतिपुथी है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म। और फिल्म के निर्देशक मिस कुलानंदिनी महंत को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। As we put our hands together for the filmmaker, there's a film that recognizes and is being awarded for its brilliant narrative, complex nature of human ambition and fulfillment. And the award for the Best Action Direction Award being given to stunt choreographer Shri Anbumani MM and Shri Arivumani MM, receiving Silver Lotus for Kannada film KGF Chapter 2, Shri Anbumani MM receiving the Silver Lotus. एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म KGF Chapter 2, जिसमें भावनात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया। फिल्म का प्लस पॉइंट है स्टंट कोरियोग्राफी। And now for KGF Chapter 2, Shri Arvumani MM receiving the Silver Lotus. Shall we put our hands together, ladies and gentlemen? The film sets a new benchmark for action cinema with its meticulously crafted sequences that are both exhilarating and visually stunning. The Best Choreography Award being given to choreographer Shri Satish Krishnan, receiving Silver Lotus for the Tamil film Thiruchitram Balam. For portraying conversations through elegant choreography without either glorifying or losing the sense of the characters. सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर श्री जयकर आरुद्रा को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल से नवाजा जा रहा है। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। Through the breathtaking visual effects, Brahmastra tells the story of a young man, Shiva, and his mission to protect a weapon of enormous energy from dark forces. और इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर श्री विरल ठक्कर को भी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल का सम्मान। As we put our hands together, the film recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. और इसी टीम के श्री नीलेश गोरे सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से एक आदर्श मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांड की रचना की गई, जिसमें भारतीय महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को भी निर्बाध तरीके से जोड़ा गया। An award for the Best Lyrics Award being given to lyricist Shri Naushad Sadar Khan for receiving Silver Lotus for Haryanvi film Fauja. गीतकार नौशाद सदर खान ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों के जज्बे को अपने गीत में शब्दों के माध्यम से बखूबी पिरोया है। On to the next much-awaited award for the Best Music Direction Background Score goes to Shri A.R. Rahman, receiving Silver Lotus for the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जोरदार तालियां। Award now for the Best Music Direction Songs being presented to Shri Preetham, receiving Silver Lotus for the film Brahmastra Part 1 Shiva in Hindi.
पारंपरिक रचना, शानदार संगीत और युवाओं को जोड़ने वाली आधुनिक शैली का संगीत, श्री प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले लेखन के लिए हिंदी फिल्म गुलमोहर की डायलॉग राइटर मिस अर्पिता मुखर्जी को रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। 2 मंजिलों का घर तो बन गया, कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में न जाने कब हम। Gulmohar makes a special mark with its dialogues that reverberate with intangible silences to make up an extraordinary work. फिल्म गुलमोहर के नाम ये 30वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। Namaskar. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, my colleague Minister Dr. L. Murugan ji, Secretary Jaju ji, Chairpersons of the juries, Shri Rahul Ravel ji, Shri Neelmadhav Panda ji, Shri Gangadhar Mudliar ji, Dada Saheb Phalke Awardee, हम सब के चहेते मिथुन दा, jury members, all the award winners, friends from the media and esteemed guests. There are so many famous personalities sitting here. How many can I acknowledge? मैं प्रयास करता हूँ करण भाई का, I acknowledge you, I acknowledge प्रसून भाई, प्रसून जोशी जी, शर्मिला जी, मणिरत्नम जी, रहमान जी, Vajpayee ji. There are so many of the stars present here. I welcome you all to this great National Film Award ceremony. It's truly an honor to be a part of this prestigious National Film Award ceremony. My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithun Da for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को,
फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, इस क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी। और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। बाय नाउ मोर देन 5,000 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for WAVES program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई Creators Economy की जो rails है, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for, very strong rails for this new economy. And now the soft skills will be set up in a very innovative way. Just recently, Honorable Prime Minister approved the first National Center of Excellence. Imagine our entire technical ecosystem was created by institutions like IITs, IIITs. Our managerial ecosystem was created using the IIMs. These are the institutions which have developed some of the finest technical and managerial talent in the world. Many of these talented alumni of IITs are leading global companies like Google, like Microsoft, and now we need to create similar institutions for the creative economy. So we will be launching the first Indian Institute of Creative Technologies, IICT. And where else should it be except Mumbai? It has to be in Mumbai, right? Amchi, Mumbai. That's the cultural capital. That's where the creative energies are so well established. That's where the first IICT will be established. The Maharashtra government has already given land for it. The lease agreement is under signature by the Secretary of INB Ministry and the Maharashtra government. So very soon the first IICT will be started, and like many IITs that have created a great educational ecosystem for the country, there will be many IICTs throughout the country, which will be like IITs, like IIITs, like IIMs, and like A's. They will be the centers of excellence. They will create the talent pool which will serve not only our country, but also win over the media and entertainment world throughout the world, throughout the globe. Friends, our government is working on developing the film industry with a three-pronged approach. The first approach is talent development, and we know the world is changing very fast. We need talent. I watched the movie Kantara. So much technology is used in it, right? I watched the movie RRR. It's like movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I am told, I am new to the, I understand the film industry very well. Movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I am told, I am new to the, I understand the film industry very little. So my friends and the professionals tell me that today practically 40% of a movie
is technology, creative technology behind it. So let's create a talent pool. Let's create a talent pipeline which becomes the best talent in the world, like our semiconductor talent, like our IT talent, like our design talent. Similar talent we create in the film industry. So first pillar of our strategy is creating a very strong talent pipeline. So talent is the first pool, first pillar, first prong of our strategy. And IICTs will play a very big role in that. The second pillar is infrastructure. We all know that creating a good film, developing that magic, requires a very different type of infrastructure. And we have seen the power of some of the old and very prestigious film studios which created wonderful movies in the gone by years. Time has come when we create a new infrastructure which can be equated with the best in the world. And that is the second challenge we have taken as part of our strategy. And I will request the entire industry, the stalwarts of this industry, to come forward, give your ideas, share your thoughts, help us design a new infrastructure which will really create a foundation for a very vibrant film industry in the coming years. The third pillar is all about simplification. The third pillar of this strategy is about simplification. You have seen how much simplification has happened in the business world, in so many different sectors. Now time has come when somebody who wants to do a film, make a film on using railway as the background, or some very nice archives or some nice archaeological places in the background, or some forest in the background, the permissions must become very simple. The permissions must become simple. It must become very easy for the creative economy community to be able to go out and set up the sets and start weaving that magic. So the third big focus will be about creating structures, creating institutions which help you get all the permissions in a very simple way. So developing talent, developing infrastructure, and simplifying the processes. These will be the three pillars around which we will develop the film industry, and we are very open-minded government. We request all of you to please come forward with your ideas and thoughts, and we'll work together, friends. Finally, I would like to say film heritage and many of the films which were created in the past, we really need to preserve it. So recently we had a very interesting, very important meeting in Mumbai, and we have taken some very important decisions. Prasun Bhai was part of that meeting. We have taken those decisions to make sure that each and every part of our heritage is very well preserved. The films, the posters, the equipment which were used and in those times, the newspaper clippings which came during those times, we must preserve all that, because that's a very valuable treasure which cannot be created again. We'll create new heritage, but we must protect what we have already created. So friends, with these words, I would like to once again congratulate all the winners, and I request the film, media and entertainment world to come together and work with us. Together we will take our media and entertainment industry to new heights. The blend of tradition and modern storytelling will keep our culture thriving and inspire the generations to come. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, friends, taking the special evening forward, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward to confer the next set of awards for feature film category.